The Delhi Chief Minister is asking the Prime Minister whether he's a criminal or a free citizen of India. I'm Barkhadat, you're with the Mojo story. On the program today, our focus is on the Slugfest over a Singapore visit, a Singapore invite to Arvind Kejriwal that he has still not received the green signal for from the government. The BJP is taunting the Delhi Chief Minister, saying that the summit he's been invited to is actually a mayor level summit, and the Surat mayor is also attending this summit. The Aam Aadmi Party is now protesting. They're asking why the chief minister is being treated like a criminal instead of a free citizen of India. The rules, of course, require that any foreign visit by state ministers or chief ministers need to go ahead from the prime minister's office and the foreign ministry. So, how do we decode this slugfest over Singapore? What's really at play here? This has, of course, happened in the past. Mamta Banerjee, for instance, in the past was denied permission to go for a conference to Rome. Let's introduce our guests on the program today. We're joined by Sandip Ghose, commentator and columnist. Welcome to the program. Ashutosh is with us, senior journalist, has also seen life from the other side in politics, in fact, at a time with the Aam Aadmi Party. Welcome to the program, Ashutosh. Also joining us, representing the Aam Aadmi Party today is Abhinandita Mathur. Good to see you, Abhinandita. And also joining us from the BJP is Khemchand Sharma. Namaskar and welcome to the program, sir. Welcome, everybody. And let me actually ask Abhinandita, why does this matter? Why does this matter? That is what the BJP is asking. How does it matter? Why does it matter? Why is this a priority? Right. There are some things, Barkha, that are actually national issues of national pride. We can have our own political differences. Obviously, we contest elections, then a person becomes a chief minister and a person does not, and we have a prime minister heading the country. We already know the system. But there are some things in which we all take pride. For example, if a sports person who is representing the country wins abroad, we all celebrate it. Then we don't think whether the person is from Orissa or from Delhi or from Bombay. So that is the first thing I'd like to put out. This is actually a moment of pride for all of us. And there is no denying the fact that in 70 years, after 70 years, the kind of work that the Delhi government is doing is unparalleled. Now, when we are getting recognition and recognition abroad, that is not a recognition just for Arvind Kejriwal ji. It is also a recognition for Narendra Modi ji. It is also a representation for several other, for everybody else, for all Delhiites. So what is very confusing is that when we have an opportunity to actually positively present our country at a very why should there be a problem in the central government and Modi ji giving, permission to Mr. Kejriwal? On the contrary, I would like to know why have they not given permission until now? Okay, and I think you make an interesting point about how certain moments need to transcend competitive politics, and certainly when India, is represented abroad, in particular, it is something that you do on behalf of India. Right. Let me take that to Khemchandji. Khemchandji, what? So, Delhi is the sorry. capital of India. I said Delhi is the capital of India. I mean, it's a moment of pride in that sense too. Khemchandji, what is the problem? After all, we now know from Amit Malviya of the BJP that the mayor of Surat is going. It's not that the BJP is not sending its leaders for this conference. So, क्या problem है? Barkhaji, everybody is asking. If you go to and visit the site, worldcitysummit.org, nowhere Arvind Kejriwal ji name is there as a speaker. Why? If you are claiming you've been invited, your name should be there. The name of BJP mayor from Surat, Hemali ji is there. So do you want to go over there as a participant to listen over there? Do you want to insult the government of Delhi? If no, then why? What is the problem? Why the organizer haven't published your name on a website? That is the essential thing. People can see. People are asking. No, And but second thing, why Kejriwal? Khemchandji, Can maybe I that complete, has not please? happened. Ha, sorry. आप बोलिए, आप बोलिए. Barkhaji, can I continue, please? Yeah. And second thing is, you've already introduced a new model. If you have done something, prepare a video, prepare a slide, prepare a PPT, upload it on YouTube, publish the links. Everybody can see. Why you are not doing it? Third, you are a CM without any portfolio. It means
you are liable and you are answerable for nothing. If it is urgent, I have seen the category. There is a category of mayor. They are the moderator. They are the expert from the industry. What sort of the skills you have? What you are going to represent over there? Neither you are an engineer, nor you are a specialist in particular domain. So what you are going to talk over there? Your Okay. fudgy model. Because I have a none question of for the you. department, please let me complete, Barkhaji. I'll be keep mum because it won't be justified for me and for the party. आप वहां जाके बताना क्या चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आधी दिल्ली प्यासी है, वे पानी का कोई इंतजाम नहीं कर पाया, बारिश में घरों में अननेसेसरी पानी घुस जाता है, गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं होता, ये बताना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं मैंने 500 स्कूल बनाने का वायदा किया था, 16 बंद कर दिए, एक भी नया स्कूल नहीं बना पाया? आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने वायदा किया था सारे टीचर्स को, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं गवर्नमेंट में, सबको परमानेंट कर दूंगा, लेकिन 22,000 से ज्यादा टीचर अभी वहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि मेरा एक्सेस का बजट है लेकिन 12 कॉलेज जो डीयू के हैं उनके सपोर्ट स्टाफ को मैं सैलरी नहीं दे पा रहा? आप क्या ये बताना चाह रहे हैं दिल्ली जो सेंटर ऑफ इंडिया है वहां पे आपने वायदा किया था कि मैं जो डीटीसी का बेड़ा है उसको 11 से 15,000 कर दूंगा, वहां पे मात्र 3700 बस हैं वो जो अपनी लाइफ खत्म कर चुकी हैं, जो कंडम बस हैं जो गर्मियों में जलती हैं, बारिश में खराब होकर खड़ी रहती हैं? क्या आप ये ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है दिल्ली की, आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं? सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, क्या आप इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं? चलिए, अब मुझे एक दिल्ली सवाल का जो पूछ प्रदूषण लीजिए। लेवल अच्छा, वर्स्ट स्तर पे है, क्या आप ये अखिलेंद्र जी, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट सुनिए टू ना, डू? क्या आप मेरा कुछ एक सवाल है पिक्चर आपसे। लेने के लिए, क्या कुछ मेरा वीडियो एक क्लिप्स सवाल है लेने के लिए, मेरा एक जस्ट 30 सवाल है सेकंड आपसे। मोर, 30 सेकंड अच्छा, मोर प्लीज, 30 सेकंड मोर, ओके। क्या कुछ वीडियो क्लिप्स के लिए, फोटो के लिए आप वहां पे जाना चाहते हैं, और वो भी एज अ पार्टिसिपेंट? अच्छा, व्हाई यू सुनिए, आर नॉट अ मैं स्पीकर आपसे ओवर मैं देयर इन द आपसे लिस्ट मैं इवन? आपसे मैं आपसे एक संक्षेप में जवाब देना, क्योंकि मैं आशुतोष और संदीप का भी बयान लेना चाहती हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सच में न्योता नहीं आया, कि क्या आप कह रहे हैं कि आया भी हो तो उनको जाना नहीं चाहिए? दोनों में से आप क्या बात कह रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, अगर पब्लिक डोमेन में नहीं है इस पे तो कुछ भी हो सकता है। ही हैज टू क्लैरिफाई, ही हैज टू टेल कि बाकी सबका नाम पब्लिश है फोटो के साथ, आपका क्यों नहीं है? और ठीक आप है। वही सीएम हैं जिन्होंने सिंगापुर वेरिएंट नाम दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जस्टिफाई करना पड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब ऑफिशियल देना पड़ा। वहां पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या आपको सम्मान मिलेगा, या आपके साथ वहां पे कुछ ऐसा होगा जो गवर्नमेंट इंडिया को लगता है कि वो कुछ गलत हो सकता है, जो दिल्ली की इज्जत के लिए भी खतरा हो सकता है या भारत की इज्जत के लिए भी खतरा हो सकता है? आप चले, बताएं ना, लेट्स व्हाट ओपन यू दिस वांट टू अप। डू ओवर देयर, ओके, एंड ओके, हाँ। व्हाई यू आर एक नॉट प्रॉपर्ली इनवाइटेड? ओके, और लेट मी कैटेगरी भी ओपन दिस नेफ्ट अप। की है, आप तो सीएम हो। चले, चले, अब हमने दोनों पार्टी से उनका एक पर्सपेक्टिव सुन लिया। लेट्स ओपन दिस अप। आशुतोष, व्हाट्स एट स्टेक हियर? What is at stake here? Because if you do basic research, you will find examples in the past when there have been politicians who have been denied permission to travel abroad by law. Members of parliament need permission. State ministers need permission. Chief ministers need permission. Ashu. See, Barka, I always thought and I believe that India is a free country. I also believe that India is not a communist country. I also believe that India is a federal democracy. But if the chief ministers of a particular state, whether it is a small state or the big state, if they are treated like a department of the central government and they need to seek permission from the government to go abroad, that means India is still not a federal democracy. India is still a communist state where everything is decided by the supreme leader. See, I think this is absurd. Absurd for the simple reason you are asking a question to a chief minister who's a leader of a political party, who commands, who has two states where his government is there, and you think that he does not know, he doesn't know where he has to go, what he has to go, whether wherever he is going, it's below his stature or above his stature. If you think that Mamata Banerjee cannot go to Rome, and that has to be cleared by some babu in External Affairs Ministry, I think you're basically questioning the intelligence of these top leaders. So I think this is really absurd. And if this is continuing, even when Manmohan Singh government was there, Atal Bihari government was there, this rule has to be struck down from the India's bureaucratic apparatus.
This is really, really absurd. And second point is, because I still believe that there is a center state, there is a creative relationship between center and state. Why state needs all the time some clearances from the center? And does the center believe that they are the supreme repository of all the wisdom at their command? Or do you want to say that these chief ministers, the top leaders of the country, they do not know in which country they have to go, in which conference they have to attend, or what they have to say there, what they have to say there? So you're saying, Ashu, that the chief ministers must be allowed to decide for themselves. You must count on them to be patriotic Indians outside, which of course I think everybody would be. And this is infantilizing grown men and women. Sandeep, Ashutosh says, and I think I have to agree, that unless there is a foreign ministry or a diplomatic sensitivity involved, for example, Pakistan, China, I completely agree. For example, let's say Russia, Ukraine, in the middle of a war, I see it. But Singapore, there's no problem. There's no diplomatic problem between India and Singapore. What could be the issue here? See, Barkha, I can't speak either on behalf of the government or on behalf of the party, which Khemchandji did explain. I can only take some common sense view. And there is in any organization or any place, first of all, there is this question of appropriateness and what is fitting. So tomorrow, say in your organization, you could be invited for an award by some kind of a vague organization or somewhere there. Now you may, or you're one of your colleagues. Certain awards, you might tell them, yes, go ahead and accept it. And certain things you might say that, no, this is not really up to your mark and you don't go there. And this happens all the time. And sometimes it happens that we see, even in our corporate life, there are so many awards going. Some people, some awards are even paid. So when it comes, people put it up saying, I have been adjudged the 40 CEOs under 40, and then you know that there's a paid award, everybody laughs at it. Okay, now similar kind of things would apply for our chief ministers and people, what is appropriate. Now, from what I have heard, what Khemchandji was saying and whatever I'm reading in the papers, whether this is an appropriate forum for somebody at the level of CM, that needs to be seen. Mamata Banerjee's instance you cited, that was the reason given. It was not because she was going to meet Rome or others. That was the official reason given. The government has to have a justification. We similarly have other MPs who don't take permission, go and then diss the country. Okay, that is a very dangerous place, and blah, 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 they go on saying. So some people do that. It's not a question of, people don't. Okay, your obvious references to Rahul Gandhi. I want to play out Arvind Kejriwal's statement. Ashutosh, a brief interjection before that. See, I think the similar question should be asked about the central government, whether the Prime Minister should be allowed to go to Howdy Modi, and where he breached all the diplomatic niceties and said next government should be about the Donald Trump. So who will decide? I think that our leaders are intelligent enough and they understand what is diplomatic and what is not diplomatic, where they should go, where they should not go. This is completely subordination of the state governments under central government, and central government treats them like the department. That's absurd, and that goes. Okay, I'll let Sandip respond. Then there is no point in a debate, Barakat. So let's close. No, I don't think it's a debate. We are going into it. Let me complete my whole point. Of course, please complete. Abhi chala gaya New York mein. Come on, Sandip. Come on. Complete your point. I love to say that therefore has Arvind Kejriwal displayed that degree of discretion. He makes claims which all of us know sometimes are absurd. Like, I have stopped corruption in 10 days in Punjab, or I have done this or that. And he himself, as Khemchandji was saying, he has not been very responsible about commenting about other states, specifically about Singapore. And Singapore, you are saying, Singapore and India, as we have seen of late, there has been strains in the relationship. And again, fingers up, so let him speak. But nobody's interrupted you. Now you complete your point. Why are you being so prickly today? I don't know. Again did this, so let me complete. But I can't stop somebody from raising their finger. I'm not their class monitor. He stopped me and he started speaking, so let him speak. But he's not speaking. He's not speaking. You are. Nobody else is speaking. We were listening to you. You interrupted me in that way.
So there I is a allowed him an strain in interjection. relationship. Now, please complete your point. Huh. So there is a strain in relationships over there. And it's not that. And Mr. Kejriwal has not been particularly diplomatic earlier, or his government, in talking about Singapore. So there could be a level of trust. And we have to, there is a hierarchy. If the foreign ministry and the prime minister's office or somebody who are authorized, either you let it be raised in parliament or it be raised wherever, you change the rules. But as long as the rules exist, you cannot talk of whose intelligence or whose lack of Okay. intelligence over there. Okay. Now I am coming in. That's I am coming in. No one else is, because I want to move it along. We've heard two very different sets of perspectives on this program. I want to play out Arvind Kejriwal's statement and then ask the Aam Aadmi Party why this Singapore trip has been used to make a grandiose claim like Modi is scared of Kejriwal. Obviously both parties are playing their own politics. That is politics. But first, let's listen in to the Delhi Chief Minister. अपराधी तो उन्हीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात। Take that to Abhinandita straight away. How do you go from this argument to making the argument, which we've now seen in AAP's publicity material as well, that the Prime Minister is scared of Arvind Kejriwal? It's one thing to say कि इसमें देश का भला है, देश का गर्व है, the big leaders coming, people have appreciated our schools and clinics. How did you make the leap from here to saying Modi is scared of Kejriwal? Why would Modi be scared of Kejriwal? Okay, so without beating around the bush and speaking about why it is a great honor for Delhi, etc., to be in Singapore, let's not beat around the bush. Let's come to the point. There is a serious sort of vengeance in the current central government's politics. There is no tod for Arvind Kejriwal with Modi ji. They have failed twice in Delhi very badly. Even as an incumbent, Mr. Kejriwal did really well, breaking some records. We're getting popular in Gujarat now. We're getting popular in other states. Choti jagahon pe now the Delhi model and Arvind Kejriwal model has reached. And there is no doubt that Modi ji is obsessed and also paranoid about Arvind Kejriwal. We know I mean, what the reasons are. isn't that a Yeah, very grand I'll statement to tell you make why that it's Modi not. ji is obsessed with Arvind Kejriwal? But he is, and there is, I'll explain how.
So only if, in contrast, अभी मोदी जी goes, देश के अंदर भी देश के बाहर भी मजे से झूठ बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया. Nobody has invited Modi ji or anybody from the finance ministry ever to talk about demonetization as a successful model. It is not a successful case study. Kuch bhi aur nahi hai. Because it's all fakery. Then when somebody like Arvind Kejriwal, who's educated, who's willing to engage, who's willing to learn, he goes out and, and actually walks the talk and shows what he's done. There is real evidence for what he has done. But can I ask you beyond उनका your खुलासा हो जाएगा बेसिकली मोदी जी, जी. पर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, पर मैं आपसे हम्म. पूछ सकती हूँ कि आपने ये किस बुनियाद पर या किस बेसिस पे बोला कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल के साथ ऑब्सेस्ड है? देखिए, ये तो उनके अपने टीम के भी कई लोगों ने कई बार बताया कि वो मोदी जी अरविंद जी के वीडियोस देखते रहते हैं. और ये आप एक देखिए, इतना बड़ा देश है, एक छोटी सी उसमें दिल्ली एक शहर है, अपना कैपिटल है, अगर उसमें पूरी इनकी फोर्स लगी हुई है प्रूव करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल का नाम वेबसाइट पे नहीं है, और तो बहुत क्लियर है कि ऊपर से ही इनको ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसी टाइम रुक जाए. ये देखिए कि जो भी अरविंद केजरीवाल इज इन टोटल कॉन्ट्रास्ट विद मोदी जी. देखिए, अगर कोई बाहर जाते हैं, अगर कहीं पे भी किसी ने, अब 2 लोग खड़े हैं, किसी स्टूडेंट ने, किसी देश के अंदर भी किसी ने बोल दिया कि डिग्री दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी तो आईआईटी की डिग्री दे सकते हैं, मोदी जी कब डिग्री दिखाएंगे? इसी तरह की बहुत सारी चीजें. तो कोई मॉडल इनका, तो डर यही है दैट दिस पर्सन विल एक्चुअली एक्सपोज. I want to come to one point that you said कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा सकते, लेकिन मोदी जी दिखा सकते हैं repeated national electoral successes, and the Aam Aadmi Party with its dramatic success in Punjab is still a very tiny party compared to the BJP behemoth. So are you getting ahead of yourself is something I leave you with that question. Khemchand ji is wanting to come in. I'll come back to you. Khemchand ji, Aam Aadmi Party का कहना है कि मोदी जी को केजरीवाल से डर लगता है. आप क्या बोलेंगे? आप थोड़ा समय देना. आशुतोष भाई ने भी अपनी बातें रखी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी. आशुतोष भाई तो हमारे संविधान पे ही सवाल उठा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सवाल उठा रहे हैं, हमारे स्ट्रक्चर पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. वो धरना दे सकते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी में भी रहे, एनजीओ भी चलाते हैं, सिस्टम को चेंज करने के लिए नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, तो उनके लिए शुभकामनाएं. अगर आप ऐसा ही, वैसे मैं एज फार एज आई अंडरस्टैंड, मैंने भी सभी देशों में दौरा किया है और वहां पे समझा है, अगर वहां का कोई गवर्नर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेट में भी, इवन यूएस में भी बाहर जाता है, फॉरेन में जाता है, तो ही हैज टू टेक अ क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल और द गवर्नमेंट. अब दूसरी बात आती है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से भारतीय पार्टी डर गई. जीत हम रहे. 5 राज्यों में चुनाव होता है, 4 राज्यों में धमाकेदार जीत हमारी होती है. उत्तर प्रदेश में हिस्टोरिकल हम रिपीट होते हैं, उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से हम सरकार बनाते हैं और हम डर रहे हैं. पंजाब में सीएम की सीट आम आदमी पार्टी हार जाती है, डर हम रहे. दिल्ली में अगर 2 बार हम हारे हैं तो 3 बार केजरीवाल भी हारे हैं. 2014 में 7-0 से लोकसभा हारे हैं, 2019 में 7-0 से लोकसभा हारे हैं, 2017 में एमसीडी चुनाव में बुरी तरीके से हारे. लेकिन डर हम रहे. किस व्यक्ति से डर रहे हैं? जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया है, झूठे वायदे किए हैं, यू टर्न किए हैं, सबको धोखा दिया है. आशुतोष भाई को भी धोखा दिया, उनको एमपी नहीं बनाया और लोगों को बना दिया. सभी लोगों को उन्होंने धोखा दिया है. उस व्यक्ति से हम डर रहे हैं. किया क्या है भाई? कोई भी डिपार्टमेंट, आई चैलेंज, टेक 1 by 1 डिपार्टमेंट एंड डिस्कस. और वहां पे वो शेयर क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ द स्पीकर्स देखिए, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री आर देयर, टेक्निकल पीपल आर देयर. मेरे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज. प्लीज, फिर आपका सवाल लूंगा. वहां टेक्निकल है, आप स्पीकर्स की लिस्ट देखिए. क्या करें? कितनी हंसी की बात है, हमने स्पीकर्स की लिस्ट में से केजरीवाल जी का नाम हटवा दिया. इससे बड़ा मजाक क्या होगा? क्या मजाक होगा? अब आप मोदी जी, आप कह रहे हो कि मोदी जी आपको जब वीजा नहीं मिला यूएस का तो पूरे देश ने इसका विरोध किया था आपके सम्मान में. अरे 65 एमपीज ने मोदी जी के खिलाफ लिखा था. मोदी जी की शख्सियत थी, उन्होंने अपने देश से ही अमेरिका में जो उनको सुनना चाहते थे उनको एड्रेस किया और अपनी बात रखी. दिस इज द टाइम ऑफ वर्चुअलाइजेशन. पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. व्हाट इज द नीड टू ट्रेवल? 95% people are not traveling. You can address from here. If आपके मेयर भी तो Singapore,
ऑर्गेनाइजर्स आर सो डेस्परेट टू लिसन यू, प्लीज अगर वो बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ एक्सेप्शनल मटेरियल है तो आप वर्चुअली भी एड्रेस कर सकते हो और यूट्यूब से भी एड्रेस कर सकते हो, जो आपका फेवरेट टूल है। अच्छा मुझे बोलने तो दीजिए। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, दो छोटे सवाल करिए। हाँ जी। एक तो कि आपके पार्टी के मेयर साहब भी जा रहे हैं, वो तो वर्चुअली एड्रेस नहीं करे, एक सवाल। दूसरा सवाल कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने इरेलेवेंट है बीजेपी के मुताबिक, एंड आई एक्चुअली अग्री दैट देयर इज अ ग्रैंड क्लेम बीइंग मेड हियर पॉलिटिकली बाय द आम आदमी पार्टी एट दिस पॉइंट, तो उनको इतना आप इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दे रहे बाय फोकसिंग सो मच ऑन द डिनायल ऑफ परमिशन? हम नहीं दे रहे, ये बरखा जी अदर वे अराउंड है। वो क्यों इसके लिए इतना डेस्परेट हैं, क्यों इतना सारा काम छोड़ के, बारिश हो रही है दिल्ली में, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सीवर साफ नहीं हुए, बड़े बड़े नाले साफ नहीं हुए, दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है, रोड खराब पड़ी है, टूटी फूटी रोड पड़ी है, जाम लगा पड़ा है, बसें खराब पड़ी हैं, उस पर फोकस करो भैया, सीएम हो आप, इस चीज के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हो? हम नहीं, उन्होंने इसको इज्जत का सवाल बनाया हुआ है, आपका नाम भी नहीं है, इनवाइट भी नहीं है, आप क्यों ऊपर से पढ़ना चाहते हो, क्यों दिल्ली वालों की बेइज्जती करना चाहते हो? पहले ही आपको सिंगापुर ने धुतकारा, आपके प्रति नेगेटिव कमेंट किए, अब आप ऊपर से पढ़ना चाहते हो। कुछ तो इज्जत रखो, आपकी इज्जत नहीं है, देश की तो इज्जत समझो। चलो Ashutosh and Sandip, and then we'll take final comments. Ashu, you have also been drawn into this controversy कि भाई आपके साथ भी बहुत धोखा हुआ। चलिए वो तो छोड़िए, आपका पास्ट है, प्रेजेंट की बात करते हैं। एक पॉइंट आपने कहा कि भाई ये कानून ही खराब है, why should the center be paternalizing leaders like this? ये एक तरफ है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। आफ्टर ऑल, इफ दिस वर पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, यूक्रेन, रशिया, आई कैन नेम एटलीस्ट 5 countries right now where there would be a problem if even a member of parliament was traveling abroad. तो ये इतना आसान नहीं है, foreign ministry does have to weigh in. अब आप बोलिए। Barka, since my name has been drawn to this, let me tell you very clearly on record that I was not denied the Rajya Sabha. I was offered, and I said no. For other reasons, I'll write about it. And this, I know the BJP is quite expert in expressing lies and propaganda and all that. And I was never bitter about it. I never accused Aam Aadmi Party. I never accused Arvind Kejriwal. That's a fact. आप खेमचंद जी, आप उन्हें बोलने दीजिए। खेमचंद जी प्लीज। Can you find one single statement of which I accused bitterly Arvind? Never. In fact, I was the only one. When I left party, he said, "आपसे तो 7 जन्मों का रिश्ता है, कभी नहीं छूट सकता." That's a different thing altogether. Point here is very, very simple. I think the Arvind Kejriwal and Narendra Modi, they both have a very frosty relations. It's a bordering on the line of enmity. You remember in 2015 when the assembly election were happening, what Narendra Modi has said about Mr. Arvind Kejriwal, that he's an anarchist. His place is in a jungle. But Kejriwal has also used very personal language for the Prime Minister. दोनों की भाषा एक दूसरे के लिए काफी abrasive रही है. That was later when Arvind Kejriwal won with 67 seats. Later, when their MLAs were being arrested left, right, and center, then he used the word. It was Mr. Modi who first started in the campaign, called him anarchist, his place in the jungle, and AK-49 something, all kinds of things were said. So they both have a very different relationship, which is very bitter, with bordering on the lines of enmity, and they both do not like each other. Second point is, I think the problem with the BJP and the Modi is that the BJP, which as a Jansang, they could not form the government even after 30 years of being a political party. The first 3-4 elections they won, even in 1984, they just got 7.46% votes nationally. First government they formed in 90s when Kalyan Singh became the chief minister. Arvind Kejriwal in its first attempts gets 29 seats. Second attempt, he gets 67 seats. Third attempt, he gets 62 seats. Okay, but do you think when the Aam Aadmi Party says that Modi is scared of Kejriwal, it's a plausible statement? I'm saying it's a kind of a thing because Modi understands the possibility of a brand called AAP and the potential of Arvind Kejriwal. So it has to be nipped in the bud. That's why this whole thing starts. Okay. That's Sandip, please. Very quick 3 comments, Barkha, and I'd appreciate if I'm not representing BJP. I've come here as an
independent thing. The objective entirely seems to be to run down Modi and BJP, and I'm not either way a party to that, and that's why I was very Whose surprised. objective? Whose No, that's why I was objective? very surprised that when I'm making an independent thing, again, Ashutosh's finger is going up, and that finger looks a little obscene. But I don't understand. I don't understand whose agenda. There are two of you who have one view. There another two have a No, different view. everybody. It's absolutely evenly positioned, this debate. So I don't really understand the allegation here. But do go ahead and make your I point. don't understand that because I am trying. This is not. I don't know what's the evenly positioned debate. There are anyway. I am making my comment independently, and I would appreciate if people can disagree, people can refute, but at least let me make three things. First of all, I find this very ridiculous, or rather amused that media, a certain section of media has been trying to equate Arvind Kejriwal with Modi. Not from today, from 2014 when he was bathing in the Ganges in Varanasi. They gave him a chance that he is going to be the giant killer and doing, and everywhere, whatever he does, they go on trying to compare as if he is the only challenger of Modi and nobody else. And he is at the same, putting him at the same level. And so therefore a statement like, if you're playing up or amplifying a statement like Modi is afraid of Arvind Kejriwal, I don't think there can be anything more ridiculous than that. In fact, more so, then next thing he'll say the Singapore PM is afraid of him because that's also a city-state. Delhi is a city-state. I've done such great work in Delhi. They just might make me the PM of Singapore. And, that's the kind of statement Arvind Kejriwal makes. And Arvind Kejriwal, if people have a trust deficit in him, you've seen in the Prime Minister's meeting on COVID. He's supposed to be a chief minister. He keeps the whole camera on for public consumption, which is bad form, which is bad etiquette. Now, therefore, if people have a trust this thing, first of all, you're not invited there. It is not a forum appropriate at your level. Then why are you going there? Are you going there, therefore, to go and again badmouth the government? So government can have reservations, and especially with Singapore, I repeat, there has been diplomatic tensions, we all know, in the last 1 year. It's not that there is a hunky-dory relationship. And Arvind Kejriwal is known in this innocent manner to make those statements. So if the government has a certain reservation, the government has a right to it. And we cannot then suddenly elevate somebody to the level of, he is as if Modi, if a direct competitor, Modi is not able to sleep without thinking of Arvind Kejriwal. That's a level of ridiculousness that he goes on, watching Arvind Kejriwal's videos at night. I don't know who talks about it, but I would think that gentleman has got better things to do or more things to do than to watch Arvind Kejriwal's video at night. Okay, so let me take this to Abhinandita. I actually think that, the Aam Aadmi Party makes a good argument when it says, why are we not being allowed to go? We are grown up, we are elected, we should be allowed to decide for ourselves. But then when you elevate it to equating Arvind Kejriwal, despite the recent success in Punjab with the BJP juggernaut, the argument tends to fall flat. And then a Sandip can walk in and say, you have delusions of grandeur. And why would anyone take this claim seriously that Modi is watching videos of Arvind Kejriwal at night? The election results speak for themselves. The Aam Aadmi Party is an infant party compared to the repeated electoral successes of the BJP. What would you say to that? And Arvind Kejriwal, 1 second, Barkha, has been discredited by Arun Jaitley when he was dragged to court for making allegations. With Nitin Gadkari, he had to go and get peace there because he's known to make reckless statements. Okay, let Abhinandita respond, then Ashutosh, then Khemchand ji, and Sandip can have the last word. Abhinandita, go ahead. Yeah. मैं खेमचंद जी को और बाकी सबको भी ये बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, हमें ये डिल्यूजन नहीं है. देखिए, मोदी जी बहुत बड़े हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, मोदी जी एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक भी करते हैं. अरविंद केजरीवाल तो एक बहुत साधारण आदमी है उनके कंपैरिजन में. है एक छोटी सी जगह के, आप जैसे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर एक छोटी सी जगह के, उनको आप लोगों के हिसाब से तो उनका मॉडल भी फर्जी है. अरविंद केजरीवाल जी बहुत छोटी पार्टी के हैं और बहुत हम लोगों की पार्टी बहुत छोटी है, हम लोगों की स्टेट अभी बहुत छोटी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ना जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है इंटेंट, ऑनेस्टी और एफिशिएंसी. ठीक है, कम टाइम में, कम रिसोर्सेज में, इतने चैलेंजेस के बाद जो काम हमने करके दिखाया, अब उसमें
मतलब ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता सॉरी बीजेपी के प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट के गिन रहे हैं, मतलब आई एम नॉट इवन गोइंग टू गेट इनटू दैट. But this claim that the Prime Minister is scared of the Yes, Delhi Chief because Minister, where does this come from? okay, this comes from the fact that now when in a democracy he should be, a PM should be endorsing something that is good, right? He's also our prime minister. Now this vendetta towards Aam Aadmi Party, this vendetta towards Arvind Kejriwal, it is very clear that there is some discomfort and insecurity, and not for today. Obviously he is more powerful, but he should then show some grace. When a bigger person is edgy, a more powerful person is edgy and actually petty. Right now, Okay. BJP is doing really petty politics, which does not suit the Prime Minister's office. Okay, Ashutosh? See, one can criticize Arvind Kejriwal left, right, and I think Barkat, this is the question for BJP. एक मिनट में मैंने एक ऑर्डर बनाया था, इसलिए आई एम कमिंग राइट आफ्टर आशुतोष टू यू. So you are missing the order. अच्छा चलिए आप पहले कर लीजिए सवाल, कोई बात. सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मेरा क्वेश्चन फ्लैश नहीं कर रहा है, आम आदमी पार्टी का क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, और आदरणीय मोदी जी का जिस तरीके के फोटो आप फ्लैश कर रहे हैं काइंड ऑफ, प्लीज, और हमारे क्वेश्चन भी फ्लैश करिए स्क्रीन पे. ऑफ कोर्स, तो लगे कि भाई बराबर का आप ये देखिए व्हाई इज केजरीवाल सो डेस्परेट टू गो टू सिंगापुर. आप देखिए, रिपीट करिए, मैं आपको 1 to 1 नहीं जा रहा, यू कैन फाइंड द डिफरेंस. देखिए मैं अभी हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला हम छोटी पार्टी हैं, हम छोटे अभी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंटेंट ऑफ वर्क या इंटेंट ऑफ ऑनेस्टी हमारे केजरीवाल जी में है. उनकी जो इंटेंट ऑफ ऑनेस्टी का सबसे बड़ा एग्जांपल है विजय सिंगला पंजाब, सत्येंद्र जैन दिल्ली में महीनों से जेल में है, कोर्ट बार बार उनको बेल नहीं दे रहे, और जब फंसते तो कहते हैं कि मैंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है. किसमें? कोरोना में. अगर मेमोरी लॉस कर दी है तो भी मंत्री नहीं होना चाहिए, करप्ट है तो भी मंत्री नहीं होना चाहिए. ये लेवल है ऑनेस्टी का. जो व्यक्ति मात्र आरोप में इस्तीफा ले लिया करता था, ऐसे कागज हिला के, ये करप्ट, वो करप्ट, ये करप्ट, सिर्फ मैं ईमानदार, सब इस्तीफा दो, क्यों नहीं मांग रहा है भाई? कौन रोक रहा है आपको सत्येंद्र जैन को बाहर निकालने से? क्योंकि सत्येंद्र जैन सिर्फ मुखौटा है, असली घूसखोर 2 लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब समझते हैं. अपने आप को बचाने के लिए सत्येंद्र जैन को मेंटेन किया हुआ. व्हाई? क्या ये मॉडल दिखाने के लिए आप सिंगापुर जाना चाहते हैं कि मेरा मिनिस्टर जेल में है, करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं, ईडी की उस पर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है और कोर्ट उनको बेल तक नहीं दे रही है? ये मॉडल आप दिखाना चाहते हैं? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? वर्चुअलाइजेशन है, अगर आपको प्रेजेंट ही करना है, यू डू इट वर्चुअली. क्यों डेस्परेट हैं आप लोग? क्यों आप इसको इज्जत का सवाल बनाए बैठे हैं? जो काम करना चाहिए, दिल्ली हैज गिवन यू द वैल्यू, दिल्ली हैज गिवन यू द गवर्नमेंट, तो व्हाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर दिल्ली? दिल्ली में सीरियस समस्या है, प्रदूषण की सीरियस समस्या है. 12वीं के और 10वीं के बच्चे जो अभी बोर्ड पेपर दे के आए थे, 50% कोर्स भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था. अपॉइंट साइंस और मैथ टीचर इन स्कूल्स, ताकि वो आईटी में जा सके, वो अच्छे कॉलेज में जा सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके. आज से 20 साल पहले जिसकी भी सरकार थी, गवर्नमेंट स्कूल से बल्क में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होते थे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, इंजीनियर बनते थे. मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, आज नहीं कर सकते. अच्छा, एक बात मुझे आखिर में बताइए, मैंने आपसे क्योंकि शुरू में भी आपने जो इंटेंट की बात करी, इंटेंट ऑफ फर्जीवाल के अलावा देयर इज नो इंटेंट ऑफ डेवलपमेंट, ऑनेस्टी, वर्क. और आशुतोष भाई तो पता नहीं क्या अभी कुछ लॉलीपॉप दे रखा है, इतना बड़ा धोखा देने के बाद स्टिल इज बैटिंग. मैं उनके कमिटमेंट को सल्यूट करता हूं केजरीवाल के टुवर्ड्स, बट यू आर नॉट जस्टिफाइंग. अच्छा, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप पूछिए भाई, इतनी डेस्परेशन क्या है? वहां पे किसी सत्येंद्र जैन के मित्र से मिलना है क्या? कुछ हवालाबाजी करनी है क्या? नहीं, अब ये तो वर्किंग वर्चुअली सुनिए क्या है? और आपने तो यूट्यूब का मॉडल दिया है. अच्छा, आपको तो इनवाइट भी नहीं किया है. अच्छा, लिस्ट में नाम तक नहीं है, फिर भी क्यों? अच्छा, चलिए अभी आशुतोष एंड संदीप गेट द लास्ट वर्ड्स. ये तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तो लड़ाई जारी ही रहेगी. आशुतोष जी, आप बोलिए.
खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रखते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको सुख संपत्ति मिले, आप बहुत तरक्की करें राजनीति में। आप मेरे शुभ चिंतक है, ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, ये जो विंडिक्टिवनेस है, ये पूरी डिबेट में निकल के सामने आ रही है। मतलब जो अंदर की जो बिटरनेस है वो निकल के सामने आ रही है। और ये बिटरनेस किसी बहुत अच्छे लोगों में नहीं होती है। आप गांधी को कभी बिटर नहीं पाते हैं। गांधी हमेशा अपने, वो कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। ये जो अंदर की बिटरनेस है, आई थिंक दैट्स द फंडामेंटल रीजन दैट दिस डिबेट, that if you can't criticize Mr. Modi, if you criticize Mr. Modi, then you will be rubbish like anything else. You can go on criticizing Arvind Kejriwal, Mamata Banerjee, anybody. You abuse them, they will be very, very happy. And unfortunately, few analysts in a disguise, they also like to believe into that. The problem is that the relationship between the opposition and the government is totally collapsed. Both of them, they don't want to tolerate each other. That's the saddest part of Indian democracy. I have seen when Atal Bihari Vajpayee was the prime minister and Sonia Gandhi was in opposition, they were the bitter rivals for the larger political space, but they had a mutual respect for each other. That, I think that phase of politics is probably long gone. That mutual respect is gone, and that mutual disrespect is reflecting on this debate also. When certain member of the panel have a problem, when I raise a finger, I did not interrupt anybody. I was just raising a finger because I wanted to make a point. But the person concerned becomes so bitter. What crime I did? BJP spokesperson becomes so personal with me. What crime I did? Nothing. I'm just making my point. So that's the fundamental reason, and I think that reflects between the relationship between Arvind Kejriwal and Narendra Modi. I mean, we do live in unprecedented. I think we do live in unprecedented. विक्टिम कार्ड मत खेलिए। सुनिए आप ना, दो लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आपने तो इस देश के बोलते हुए पैनलिस्ट को उंगली करके आपने रोका, डिस्टर्ब किया। अब आप कह रहे हैं पर्सनलाइज हो रहा हूँ। अच्छा चलिए, विक्टिम कार्ड के लिए आपके एक्सपीरियंस पे सवाल ही देता। I request both of you to not speak at the same time. के बाद सिर्फ एक आदमी ने कार्ड खेला 2002 के बाद से, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। विक्टिम कार्ड खेल के Okay, I will allow Khemchand ji to respond briefly, Abhinandita to respond briefly, 30 seconds each, and I'll give Sandip the last word because these are interjections only from the party spokespeople. Khemchand ji, पहले आप बोलिए। Khemchand ji, देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से अनुरोध करना चाहूंगा, भैया दिल्ली के लिए काम कर ले। दिल्ली ने आपको सीएम बनाया है, दिल्ली ने मान सम्मान दिया है। हर डिपार्टमेंट में बुरा हाल है। डीटीसी को बेटर कर दो, सड़कें बना दो जो टूटी फूटी पड़ी हैं, प्रदूषण का देख लो, शिक्षा में टीचर अपॉइंट कर दो, मैथ और साइंस के टीचर अपॉइंट कर दो, बच्चों का ख्याल रखो, पानी की व्यवस्था कर दो। बारिश हो रही है, घरों में पानी घुस रहा है, सीवर तक साफ नहीं है, नाले तक साफ नहीं है, और इस पानी को प्रिजर्व कर लो ताकि गर्मियों में हमारे काम आ सके। और गर्मियों में हमें पानी के लिए हाथ नहीं जोड़ने पड़े या हाथ नहीं फैलाने पड़े। दिल्ली में एंड ऑफ बारिश होती है, उसको प्रिजर्व कर लो, उस पानी को प्रिजर्व करोगे, दिल्ली का भी वाटर लेवल बढ़ेगा। काम कर लो भैया। बाकी आपको भाषण देना यूट्यूब पे डाल दो, वर्चुअली एड्रेस कर दो, लेकिन बिन बुलाए मत जाओ, बिन बुलाए मत जाओ प्लीज। Abhinandita, 30 seconds. 1 minute, you're on mute. 1 minute, you're on mute. You're on mute. I can't hear a word. You're on mute. You're on mute. Okay, yeah. Now am I audible? Yes. जी नहीं, आज खेमचंद जी ने एक बहुत राह दिखाई है एक IITN अरविंद केजरीवाल जी को कि वर्चुअल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, और एक ये मतलब खुद आप इनफैक्ट आप एक डिजिटल इंडिया का एम्बेसडर आप खुद हैं, क्योंकि आपने कई बार ये बोला कि हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। और देखिए, आपके प्रधानमंत्री खुद सारी मीटिंग्स वर्चुअल करते हैं, कभी कोई खर्चा नहीं करते टैक्स पेयर्स का विदेश घूमने के लिए। तो वो तो आपसे ही सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का होता है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे देश का होता है, सीएम दिल्ली का होता है। वो केजरीवाल पर्सनल कैपेसिटी में जाएंगे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ ही इज गोइंग लाइक अ सीएम ऑफ दिल्ली, देन आई हैव अ प्रॉब्लम। विदाउट इन्विटेशन, इफ ही वांट टू गो एज अ सीएम ऑफ दिल्ली, देयर इज अ प्रॉब्लम। Without agenda, he want to go, there is a problem. Why is showing the desperation? There is a problem. He is objecting, Abhinandita, to your phrase. Please correct. Do not be insulting to the constitutional post. I did not made any
disrespectful comment against the Kejriwal ji as a CM. I think that's a fair point. He didn't say आपके मुख्यमंत्री. He said दिल्ली के मुख्यमंत्री. You should say भारत के प्रधानमंत्री. Now let's I very proudly say that he is our prime minister, and because he is our prime minister, as a citizen of Delhi, as a person active in social work or politics, I am requesting him that देखिए अरविंद केजरीवाल जी तो आप कितने बड़े अरविंद केजरीवाल जी तो आपके मुकाबले में कुछ नहीं है. अगर वो सिंगापुर जाके कुछ सीखना भी चाहते हैं और उससे दिल्ली के लोगों का भला होगा, आप उनको प्लीज जाने दीजिए. ये बहुत पेटी लग रहा है, बाहर के लेंस से भी देखेंगे, ये पेटी पॉलिटिक्स है और ये आप ही पे छोटापन दिखा रही है. चले we're at the end now. Sandip, you have the last word. Sandip, go ahead. No, I also, have to say that I am a very, very small person in this group, especially in front of Ashutosh ji, who is not only a Varish Patrakar, a very celebrated one. So, हमारा छोटी मुंह में बड़ी बात करने का आता नहीं है. So, Ashutosh ji आपको अगर एक किया, and he also said that, I am masquerading as an independent person, but I'm actually a Modi supporter, and I don't deny that. In your own program, you introduced me as a Modi supporter, and I'm happily a Modi supporter, but that does not make me a BJP supporter or a BJP defender. I will continue to support Modi as long as I think he is justified. In this particular case, as I say, I find it very, very ridiculous that in everything people are equating Arvind Kejriwal with Modi as if Modi monitors his every movement, doesn't want him to go. If I were Mr. Modi, I can speak, knowing the huge gap Mr. Kejriwal has between what he claims and reality, I would be wary of sending him somewhere where he goes and makes these tall claims. And let's say somebody from Singapore comes tomorrow to see and find that there is nothing on the ground. Okay, that's what, and he makes claims about within Indian states that such and such state people are coming to Delhi to see our system from Tamil Nadu or wherever, and then those states issue a statement that we never came for that. So this is the credibility of the person. As I said, this person has to go lose a defamation case with Arun Jaitley, folded hands, and then comes back, goes to Gadkari in his house and retracts back. He has said so many things about Sheila Dikshit, no follow-up. And so there is a question of credibility, and if somebody has a reservation, I think it's good reason. I would support that. Okay, we'll have to close it there. An inconclusive, split down the middle, literally, conversation around this Singapore trip. Of course, Mr. Kejriwal is not the first chief minister to have been denied permission for a foreign trip. That law in itself, that rule in itself being questioned by Ashutosh. But I think the point was made on this program that we do live in an unprecedented, polarized time where it seems, and it's tragic, that neither politicians across the divide nor even commentators across the divide are able to be friendly. And that, I think, is the real tragedy. Leaving it there, Khemchand ji, Abhinandita ji, Ashutosh ji, and Sandip ji, thank you so much. And to our audience, see you tomorrow. Thank you for watching. Goodbye. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.